who are the people in Bharatiya Janata Party? And people who are joining Bharatiya Janata Party are those who once held important position in the Congress party. So if you look at the leaders of Punjab, you'll suddenly find that most of them have come from the Congress. Whether it's Mr. Jakhar, whether it's Mr. Bittu, someone who fought Ludhiana election when Manish Tiwari was nervous and couldn't ultimately, had the resolve, create the resolve to fight elections. He was the one who faced Bharatiya Janata Party and won Ludhiana. And then you had Amarinder Singh. Now you have Amarinder Singh's wife. So Punjab Congress has suddenly become the new face of Bharatiya Janata Party, which is going alone. I can start with, as I said, Congress MP Ravneet Singh Bittu, known a close associate of Mr. Gandhi, and many others. But before that, I start playing down the names of the people who have joined Bharatiya Janata Party. Let me straight away go to my input editor, Brijesh Pandey. Brijesh, why has this exodus happened? And is this the reason that the major part of them is with Bharatiya Janata Party, that they have decided to go solo? Well, I think, what is happening in Punjab is basically a state level representation of what is happening across the nation. Across the nation, many leaders, and especially leaders who are very, very close to former Congress President Rahul Gandhi, they have realized that there is no future in the Congress party. And that is the reason why, from Kashmir to Kanyakumari, right from Ghulam Nabi Azad to others, to Ravneet Bittu, to Captain Amarinder Singh, to his wife Praneeth Kaur, they have all deserted Congress party, because slowly and slowly this realization is dawning upon most of them, or all of them, that there is no future, there is no political future for them as they progress or that get closer to 2024. Congress is a sinking ship, and BJP is the ship or the political party to look forward to if you want to have a future in politics. And that is the reason why this mass desertion is happening. Interestingly, Punjab is a place where Congress is not on a weak wicket, where the BJP would be the B party, but even that is not stopping these people from jumping the ship and joining Bharatiya Janata Party. Okay, now let me play out a couple of bites and then we'll tell you why these leaders have shifted to BJP. They could have gone to SAD, but they have not gone to SAD. मैम, क्या लगता है कि बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हुई है, आप भी अभी शामिल हुए हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितनी आपको जो है कामयाबी मिलेगी? देखो, पूरी उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। उनको पता है कि असली नीतियाँ जो देश को और पंजाब को बचा सकती हैं, वो बीजेपी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व के नीचे ला रहे हैं। मैम, दूसरी पार्टियों से लगातार शामिल हो रहे हैं, हालांकि आपकी चर्चा पहले थी कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं। क्या लगता है कि इसका कितना फायदा 2024 में मिलेगा, जो दूसरी पार्टियों से शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस से शामिल हुए, आम आदमी पार्टी से शामिल हो रहे हैं? देखो, जो लीडर होता है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके पीछे लोग होते हैं, और पॉलिटिक्स में जो लोकतंत्र है उसमें लोग जोड़ेंगे तो बाधा ही होएगा। बहुत सारे नेता आपकी पार्टी में अब शामिल हुए हैं बीजेपी में। आपको क्या लगता है 2024 के लिए बीजेपी कितनी तैयार हो चुकी है? देखो जी, पंजाब के लिए पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी के लीडर सब आए हुए हैं यहाँ, और हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, और पूरा काम चल रहा है और अच्छा रिजल्ट आएगा। सुशील रिंकू पार्टी में शामिल हुए, और भी बहुत सारे नेता शामिल हुए। आप बहुत टाइम पहले से बीजेपी में काम कर रहे हैं, क्या लगता है इन नेताओं के आने से कितनी पार्टी स्ट्रांग हुई है? जो भी ज्वाइन करता है उससे पार्टी स्ट्रांग होती है, और आप देखोगे जैसे जैसे दिन जाते हैं कैसे बीजेपी के लिए ठीक अच्छा रहेगा। पटियाला से आप लड़ रहे हो, जहाँ प्रणीत कौर जी टिकट लड़ रहे हैं? प्रणीत कौर जी लड़ रहे हैं। देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचार को साथ जुड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के गरीबों के लिए किए हुए पिछले 10 वर्षों के काम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन से प्रेरित होकर लोग जुड़ रहे हैं। और मैं शीतल अनराल और सांसद सुशील रिंकू जी का, दोनों सीटिंग विधायक और सांसद हैं, दोनों का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत करता हूं। और ये बढ़त, निरंतरता, ये सहयोग, सबका साथ सबका विचार,
इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जन जन की आवाज बनकर पंजाब की 13 सीटें जीतेगी। So I'm joined by my correspondent directly from Punjab. Yes, I'm talking about Mohit Malhotra. Mohit, how come Congress leaders in Horde have joined Bharatiya Janata Party and not Shiromani Akali Dal? देखिए, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है कि वाई बीजेपी, मतलब बीजेपी में क्यों आ रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि शिरोमणि अकाली दल इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो एक उम्मीद थी कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे और एक फिर से बूस्ट मिलेगा, वो नहीं हो पाया। और दूसरा, अकाली दल को एक तरह से जो पार्टी है अकाली दल, उसको बस पंजाब सेंट्रिक पार्टी का ठप्पा भी लग गया है, क्योंकि जो पंजाब के इश्यूज थे उसको लेकर इन्होंने बीजेपी के साथ जो भी बार्गेनिंग की सीट्स को लेकर। हालांकि बीजेपी चाह रही थी कि अब वो छोटे भाई के रोल में नहीं रहेगी, बिग ब्रदर के रोल में रहेगी यहाँ पर पंजाब में। तो जो सीट एलोकेशन की बात थी उस पर दिक्कत तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल अपने आप को पंजाब में ही सीमित रखने का एक एजेंडा लेकर चल रही है। जबकि बीजेपी को लेकर जितने भी लीडर्स अब शामिल हो रहे हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी की जो डबल इंजन का जो उनका मैसेज है, जो यूपी में देखा, मोहित, हम हरियाणा कह में सकते देखा, वो पंजाब में हैं, नहीं हो हम पा कह रहा। सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया है पंजाब में, और जो कांग्रेस है वो नई बीजेपी है पंजाब में। नहीं, ये लाइन आपने ली जरूर है, चेहरों के हिसाब से तो आप की बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन कांग्रेस का संगठन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, आप आज का डेवलपमेंट आप देखें, मनीष तिवारी को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। गुरजीत औजला, जो कि अमृतसर से एमपी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला, मेरे जाने को लेकर खबरें फैलाई जा रही हैं। तो लेकिन मोहित संगठन को मोहित बचाना मोहित पड़ेगा। पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं जाएंगे, वो तो मतलब यूपी में इतने बड़े उदाहरण हैं। चौधरी चरण सिंह के पोते कहते, मैं, उन्होंने बोला मेरे इंटरव्यू में, अमित शाह से नहीं डरता, वो जाके दूसरे चुनाव में चले गए जयंत चौधरी। तो जा तो सब सकते हैं, लेकिन मोटा सवाल, द बिग क्वेश्चन हियर इज दैट in hordes, the leaders of the Congress party have joined Bharatiya Janata Party. Rene joins me. Rene, thank you so much for joining me. When people join you, it tells you that you are not comfortable. But when people join the other political party in hordes, it just tells you that there is an organizational crisis in the issue. So what is happening in Punjab is also a statement on the Congress party. Do you think that Bharatiya Janata Party is absorbing Congress leaders in hordes in Punjab and reconstituting itself around it? Good evening, Karthik. Well, you are right. The BJP is playing out its strategy, particularly in Punjab, where they were not even the second, major political player. If you remember from the last state assembly elections, where it was a straight fight between the Aam Aadmi Party and the Congress, which was on the wane. So from that perspective, for the BJP to be, accumulating people is only keeping with their strategy for Punjab, where they were unable to form a sizable, force to be reckoned with. As you would, if I may add here, Punjab has always been very close to the heart of the Prime Minister Narendra Modi for a different reason. He has done a lot of work in Punjab in his early Pracharak days, and as I was told, he had even spent close to 10 years in Punjab. 10 to 15 years of his, Pracharak days, he has spent a huge time over there. And even in the last state assembly elections, the BJP was banking on a large number of Hindu voters, women voters, and other beneficiaries over there. That's a very important word you have used. That's a very important word you have used. Let me go back to Mohit Malhotra. Mohit, लोग कहते हैं कि ये खत्री तबका ही वोट करता है पंजाब में. Haryana has broken that myth. People thought that it's a minor party, but BJP has ruled Haryana now for 10 years straight away. आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में पोटेंशियल है पंजाब में टू ब्रेक ग्राउंड, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया? देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये क्वेश्चन कई बार हम जर्नलिस्ट जब निकलते हैं फील्ड में, लोग पूछते हैं कि बीजेपी इतना बड़ा गेम क्यों चलना चाह रही है, इतने बड़े बड़े चेहरे दूसरी पार्टीज के तोड़े जा रहे हैं, अब उसमें शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी इस बार फुल ऑन गेम खेलेगी पंजाब में,
बीजेपी की देखिए 2 सीट्स ऐसी हैं जो अकाली दल के साथ वो रहे तो भी उनको आई, जब नहीं रहे तब भी वो उनको आई, जिसमें एक होशियारपुर की बात कर लीजिए, एक गुरदासपुर की बात कर लीजिए। बीजेपी मानकर चल रही है कि अभी भी ये जो हिंदू बेल्ट सीट्स हैं वहां पर वो अच्छा करेंगे और जीतने की स्थिति में है। लेकिन बाकी जगह जो शहरी वोट है, जो वहां पर भी आप जो हरियाणा में हमने देखा कि जाट वर्सेस नॉन जाट वोटर्स की फाइट को बना दिया बीजेपी ने, और पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में जो सीएम है वो एक पंजाबी कम्युनिटी से दिया गया, उसके बाद सैनी कम्युनिटी से भी एक सीएम अब अपॉइंट किए गए। तो पंजाब में भी बिल्कुल इसी तरह का गेम प्लान लग रहा है बीजेपी का कि जो जट वर्सेस नॉन जट है, जिसमें बड़ी एक जो आबादी है, हिंदू वोट है वहां पर, दलित वोट है 33% के आसपास, तो उनको टारगेट करने की पूरी ये प्लानिंग हो रही है। सुशील कुमार रिंकू दलित चेहरे जालंधर से आम आदमी पार्टी के, पहले कांग्रेस में होते थे, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, बाई इलेक्शन में जालंधर से जीते थे, उनको अपने साथ ले आया, तो जालंधर में काफी मजबूत स्थिति में है। और शहरी जो वोट है वो राम मंदिर का जो पूरा माहौल देश में बना, जिसको कहा जा रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तो वो भी काफी कुछ चीजें हैं ऐसी जिसको लेकर बीजेपी ये मान रही है कि मोहित, आप उनके पहली पास बार बड़े मुद्दों की बात करें, बट रेनी, कमिंग बैक टू यू, you know, Punjab is divided into Malwa, Doaba, Manjha. There were other Punjab specific issues on which the parties contested election. The Aam Aadmi Party swept in Malwa, which is primarily Dalit Sikh belt, if that word is correct. There's a Jat Sikh constituency also. What is the social route on which BJP is feeling so confident? I mean, so you asked me before this election, there is none. You're right, Karthik. You must understand, one of the most recent big developments from the BJP to keeping all these caste factors in mind was Chaudhary Charan Singh being, nominated for the top civilian award of the country. Now, that was done with a deliberate intention to, target the Jat votes. And you saw the immediate fallouts of that happening in Bihar, and the very move, you could call it a political masterstroke. But we have to remember, in Punjab, the Aam Aadmi Party was able to sweep through, and that was in no small measure thanks to also a lot of if you could call it the Khalistani supporting factions based out of foreign nations also backing up the Aam Aadmi Party. So they consciously were, attracting a lot of such. But Rennie, that's that's an allegation. It's these are political allegations. It's in my show because some people, you have to substantiate it. Khalistani sentiment and people who are running Khalistani factions, they are two different things. We have to draw a line here, Rennie. As you will agree with me, I mean, the latest video that's emanated from USA of Mr. Panun, who has been, I slightly disagree, Rennie, I slightly disagree with you on this because Panun is a terrorist. So in one way, I will not go by the declaration of a terrorist on any issue when it comes to this nation. It's not that I'm giving clean chit to Aam Aadmi Party, it doesn't make a difference to me. But for me to take one statement of a terrorist and say it is right, then how do I believe what other things he's saying is not wrong? But I think the big question here is, and let me go back to Brijesh because he's the expert here on Bharatiya Janata Party. What is making BJP so confident in Punjab, boss? Is it the Haryana movement? Let me rephrase it. I will not say that BJP is very confident, but the BJP is going by what any emerging or any big industrialist does. In a new market, either you grow organically, which takes a lot of time, or you grow organically and side by side you also go for big merger and acquisition. I think BJP has adopted that strategy, by getting Bittu and others, from Aam Aadmi Party, from Congress leaders and all. By getting all of these people on one side, as Mohit pointed out, BJP won 2 seats. The fact is that, when you get 3-4 more people, who have been member of parliament and they feel that, with the kind of backing BJP has, who knows, they might increase their number of seats won in the state of Punjab. So BJP is going for big acquisition from both Congress party, which is a big party in Punjab. They won the maximum number of member of parliament from Punjab in 2019, and also from Aam Aadmi Party, which is the party in power right now as we speak. So BJP is going for that strategy, and they feel that, even 2 or 1 seat, if they gain even 1 or 2 seats, all these merger and acquisition is worth the hype for, is worth the effort is. I think you have very well summed it because Bharatiya Janata Party to fight elections in Punjab is a calculated risk.
I would say that they must have done their calculations. So it is for this reason, it's a calculated risk. But how much it is going to create a space for itself when Aam Aadmi Party has become a dominant party? They have a new politics, they have a new language, and yes, anyone who does politics in Punjab has to be responsible, because the politics of nationalism and anti-nationalism does great service to the state of Punjab, because it has gone through a decade of bloodshed and come out probably the only successful state in Indian Union which has defeated terrorism probably for all times to come.